Welcome everyone once again for the Speaker X session, and this is a very powerful series that we have started. Every Speaker X is our participant who has implemented the teachings of all of our courses and have gone to the whole new level in their practice, in their personal lives. And guys, I'm really happy, excited to share our today's Speaker X. And the Speaker X is Dr. Prem Chand Singh. So welcome, PC, and I'm so happy to see you as a Speaker X here. And your first thoughts. Thank you, sir. I am very excited. Initially, I was very nervous when I got call from you. Okay, I will be Speaker X, sir. Thank you, sir. Good Okay. morning, sir, and good morning, everyone. And you don't have to be nervous because you should be proud of yourself. Like out of like 5,000, 6,000 plus members that we have in our community, very few get the opportunity to be the Speaker X. Okay, so you should be happy about it. You should be proud of yourself. And yes, so just introduce yourself. Where are you from? What do you practice? Since how many years and everything? I am from Siliguri, sir. Uh, I am Dr. Premchand Singh, practicing here in Siliguri, Darjeeling, West Bengal. I completed my BDSc in 2002 from North Bengal Dental College, Siliguri. And I started my dental implant practice in 2018. Since 22 years, I am doing my practice. Okay, 22 years into practice. That's wow, actually. And how were the first few years? Not few years, like how was your first decade of practice? I should say actually. So what kind of practice you used to do in Siliguri? What kind of challenges you used to face? And how you used to take it further? Sir, after completion my BDS in 2002, I did 1 year house staffship from my college. And also I started a small clinic. एक दवा दुकान में 80 स्क्वायर फीट स्पेस था, उसमें सेकेंड हैंड डेंटल चेयर और डेंटल इक्विपमेंट के साथ मैंने क्लिनिक शुरू किया। और 2003 में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग सर 75 किलोमीटर है, मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उसमें सर सैलरी 12,000 के आसपास था एंड दे विल गिव एकोमोडेशन। उस समय मेरा एम था कि आई विल प्रिपेयर फॉर द एमडीएस। तो मैंने 2-3 साल तक एमडीएस के लिए तैयारी किया, बट आई कुडंट गेट एमडीएस सर। देन सर 2005 दिसंबर सर, तो मैंने सर आर्मी में एक इंटरव्यू दिया था 6 महीना पहले। तो अचानक वहां से फोन आया कि आई वॉज सेलेक्टेड। आई वॉज इन द सेकेंड नंबर। वो मैडम थी, मैडम ने छोड़ा था। तो अगेन आई कम बैक फ्रॉम दार्जिलिंग टू सिलीगुड़ी विच इज प्लेन। और सिलीगुड़ी से जो बागडोगरा आर्मी हॉस्पिटल है, ये सर अराउंड 16 किलोमीटर है। तो मैं वहाँ ज्वाइन किया 15,000 सैलरी के ऊपर। और साथ में जो पहले का जो मेरा क्लिनिक था, जो मैं एक सीनियर को दे कर रखा था, तो मैं वहाँ शाम को बैठने लगा। तो सुबह 8 से 2 बजे तक मैं आर्मी हॉस्पिटल में काम करता, फिर घर आता, फिर शाम को ये करता सर। और जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा। इनिशियली आई यूज टू टेक बसेस से जाता था, कुछ दिन बाद मैंने स्कूटर खरीदा। ठीक है सर। तो उसके बाद से सर क्या है कि मैं जो सिलीगुड़ी का जो क्लिनिक था, आई वाज नॉट डूइंग वेल। मतलब वहां सर कोई ग्रोथ का ये ऑप्शन नहीं था सर। क्लिनिक वाज इन द फर्स्ट फ्लोर और इट वाज ए पॉलीक्लिनिक टाइप। जनरली बाकी जो डॉक्टर थे उन्होंने भी छोड़ दिया। तो जो कमांडिंग ऑफिसर था हमारा जो आर्मी का, उन्होंने एडवाइस किया कि व्हाई यू आर नॉट ओपनिंग डेंटल क्लिनिक हियर इन बागडोगरा आर्मी हॉस्पिटल के पास। तो 2008 में आई टुक ए 200 स्क्वायर फीट रूम ऑन रेंट एंड आई टुक माय फर्स्ट ईयर। तो 2008 में मैंने क्लिनिक शुरू किया। तो मैं 2 बजे के बाद से हॉस्पिटल से आता, फिर मैं 2 से 3 बजे तक वहाँ काम करता, फिर 2 से 5 बजे तक फिर मैं सिलीगुड़ी आ जाता। सिलीगुड़ी का मैं क्लिनिक भी देखता। शाम का समय मैं जूनियर को रखा था हमारे कॉलेज से। तो ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद से मैं सिलीगुड़ी का क्लिनिक बंद कर दिया, क्योंकि 2 जगह से बहुत असुविधा हो रहा था। लेकिन सबसे जो बड़ा चीज है सर, 2011 में देयर वाज ए सर्कुलर आया आर्मी का कि जो भी 5 साल से काम कर रहे हैं, ये सर ईयरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस था सर, दे विल नॉट कंटिन्यू।
दोबारा इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर था उसका बीवी ही डेंटिस्ट थी। तो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि क्या होगा, सो डिप्रेस्ड। उस समय आई गॉट 25,000, और क्लिनिक से उतना नहीं आता था, थोड़ा मोड़ा जो भी आता था। माई वाइफ वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट सर फॉर सेकेंड चाइल्ड। लेकिन सर ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक छोड़ के बाद 3-4 महीना में के अंदर जब मैं सुबह क्लिनिक में बैठने लगा, तो इट वॉज क्वाइट, मैंने काफी सर चेंजेस हुआ। जो आप बोलते हैं ना कि ये जो आप छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब, इसमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, तो वो बात मुझे याद आता है सर। तो काफी चेंजेस है। जो जितना मुझे आर्मी से मिलता था उससे ज्यादा, अराउंड 45-50 के आसपास मेरा मंथली कलेक्शन होने लगा सर। तो दैट वाज द चेंज सर। यदि मैं नौकरी नहीं छोड़ा रहता तो मैं अभी जहाँ हूँ वहां नहीं रहता सर। Oh, छुड़ा powerful. दिया गया सर। And this was very powerful. Now, when you started this morning practice, which year? 2011 सर। Now look at this. Someone who graduated in 2002 for 9 years. I hope you saw his journey. You heard this, right? So doing this, doing that, doing, you know what happens? Now, this is a very powerful thing which I want to put forward here. So a lot of people make this mistake. And you know what's the mistake? Because in the initial times, clinic does not do very well. They don't make lot of money or whatever. Forget about the lot of money. Whatever money they thought they will make, they keep on doing something else to compensate that loss, so called. Okay, that's one mistake. Another mistake people make is this: they know that they will not have full-time patients in the beginning. So even if I go half day, doesn't matter, and they'll end up taking that half day job. कॉलेज में लेक्चरर बन जाओ, एसोसिएट लेक्चरर बन जाओ, किसी चैरिटी हॉस्पिटल में काम करो, ओके, गवर्नमेंट जॉब ले लो, एंड it is exactly the same way as I was talking about going to clinic on time. Okay, so it exactly happens in the same way. Because you don't go to clinic on time, you don't get patients, and you think when I will have more patients I will go to clinic on time. It's a vicious cycle. The same thing happens because you keep on going here and there and your focus is not in the clinic. Okay, you don't get patients, your practice doesn't settle, and you're like, when my practice will start settling down, I will stop doing the job. Now look at this, how we live. Very, very, very common mistake majority of the dentists make. Friends, I always say this: no matter what you do, everything takes away your time, attention, energy. If you're doing a job, half of your attention focus is you have to give to the job, right? It's not a free stuff. No matter how productive, super productive, or non-productive the job is, you still have to give time. You still have to give your focus. You still have to give your energy. Okay. Now, if 50% of your time, focus, and energy goes in the job, naturally, you have only 50% left for the clinic. Now, when you are half present in the clinic, you get half results. Now, when you give half results, the problem is those half results doesn't motivate you to be in the clinic full time. But unless you present in the clinic, you present yourself in the clinic full time, you don't start getting the full results. Now, when in 2011, PC started being in the clinic for full time, and then all of a sudden, he was like, I was surprised. Okay, I used to get more money, more revenue than I used to get in the army job or whatever. And see, I'm not talking about this job or that job. No job is good or bad in this world. It's not about the good or bad is not giving 100% time, focus, energy to your clinic. That's a bad job. Okay. So good. So see, Masar says, I was attached to the college, but only after I left, my practice grew. That's exactly how it happens. So those of you who are listening to this, maybe on YouTube or anywhere, okay,
become jobless if you really want to grow. Okay, you cannot keep, two legs in two boats and think that you will sell fastest. Impossible. Impossible. There's a very nice acronym for the word focus, FOCUS, and it says follow one course until successful. You do one thing, give your everything to that one thing, make it successful, delegate it, automate it, make it system based, then go to the second, then go to the third. Unless that first become system dependent, never go to second. Those of you who want to have more than one clinics, the simple question to ask yourself is this: can my practice function in my absence for a week, 15 days? If the answer is no, that means you will just land up playing Coco in both the clinics and land up making the same money. Let me tell you this. Those of you who have tried, you know what I'm saying. Follow one course until successful. Those of you who want to have chain of clinics, those of you who want to have some side business, the same criteria applies. You do one thing, make it best, make it work, make it successful, delegate it, automate it, move on. Otherwise, don't. So finally, you crack the deal. Okay, how to be successful, how to do private practice and all, blah, 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 blah. Okay. I'm MDS, but still I think that I'm meant for being a lecturer and all those things. See, I'll tell you what, teaching people is one thing, having that passion is one thing, but doing it because your clinic is new, it is, anyways, there are not going to be enough patients. I hope you got the context, right? Yeah, Masar says, I tried having two clinics, closed one finally. I tell you, it doesn't work. If the practice is person dependent, you will have to keep on playing Coco in those two clinics. There is no point. Stop it. Okay. So PC, from 2011 onwards, how was your journey till 2018, 19, whatever? सर उसके बाद से तो क्लिनिक का सर रेवेन्यू बढ़ा। मैंने अपना घर का फर्स्ट फ्लोर भी बढ़ाया। उसके बाद से आई टुक बगल वाला जो एक शॉप था उसको भी लिया। इट वाज पार्टली ऑन रेंट प्लस कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी मनी बोलते हैं सर, दिया। एंड 2014 में मैंने कुछ लोन लिया, 3 लाख लोन लिया करके मैं क्लिनिक को रिनोवेट किया। आई टुक 2 चेयर का क्लिनिक किया, इसमें प्रॉपर रिसेप्शन वगैरह सब बनाया। तो 2014 से आई वाज डूइंग गुड। और रेवेन्यू वाज मोर देन लैक्स, ऐसे करके 2014 के बाद ऐसे चलता रहा टिल कोरोना। Okay, so practice was good, but practice eventually become stagnant, यस सर, नो। not very flourishing, like chalta raha, ECG के graph के जैसा. So, what happens after COVID or during COVID? सर ड्यूरिंग कोविड में सर आपका ऐड आया ऑनलाइन, तो हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमने ज्वाइन किया। पहले एमडीएफ ज्वाइन किया, फिर उसके बाद से गोल्ड लेवल, और जो डायमंड लेवल, फिर सब कोर्स हमने ज्वाइन किया सर। Okay, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से सर विद इन 2021-22 में मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और अभी 2024 है। तो उसके पहले जो जो मुझे चैलेंजेस था, जैसे ग्रोथ तो हो रहा था लेकिन उतना नहीं होता था। ड्रीम बहुत सा कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा नहीं था। और पैसा का जो हैंडलिंग है, पैसा लगता था क्लिनिक में आ रहा है लेकिन पैसा खत्म, कहाँ से आया कहाँ नहीं गया। और सेविंग के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ मैंने वाइफ और मेरे पीपीएफ अकाउंट और 3-4 एलआईसी और 2-3 फिक्स डिपॉजिट, लगता था कि बहुत ज्यादा है उस समय, लेकिन अभी लगता है कि नेग्लिजिबल। और रिटायरमेंट के लिए कुछ सिक्योरिटी मनी कुछ नहीं था सर। तो ये सर Okay. हाल था। So फिर 21 के बाद क्या क्या हुआ? सर उसके बाद से सर आपका कोर्स ज्वाइन किया, आपका जो टीचिंग है सब तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो भी 60-70% जितना किया है, बट देयर वाज ग्रोथ, 4 टाइम्स ग्रोथ। कोरोना के समय जितना मैंने था 2020 के बाद से अभी तक में क्लिनिक में 4 टाइम्स ग्रोथ है। और उसके बाद से सर फाइनेंसिस के बाद में सर काफी सीखा सर,
कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, हाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, सर बहुत कुछ सीखा सर। Okay, powerful. Everybody just give a big congratulations. Only 4 times growth, he said it so plainly, so blankly, but it takes hell lot of things to be implemented to grow your practice by 4 times in 3 years, right? And that's amazing. So, and सर मैं अभी शेयर करना चाहूंगा सर, रिसेंटली सर मैं बगल वाला भी क्लिनिक लिया हूँ, 200 स्क्वायर फीट का, और उसमें मैं अभी थर्ड चेयर बैठाने वाला हूँ। अभी super. जस्ट रंग कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद से सर फ्यूचर में सर एम है सर, मेरा 2025 का एम रखा है कि 2000 स्क्वायर फीट का क्लिनिक का सर। क्या बात है, क्या बात है. That's powerful. Somebody who started the journey in 80 square feet, now aiming for 2000 square feet. Awesome. Right? So what were the things that you implemented from our courses, like top two, three things, which actually changed the entire game for you actually? 4 times growth is not a joke in this time, right? So क्या गेम चेंजर था? पहले तो सर आपने जो पेशेंट कंसल्टेशन टेम्पलेट उसको सर हमने फॉलो किया। उसके बाद से ब्रांड बिल्डिंग, पहले जो काम किया ब्रांड बिल्डिंग सर, प्रॉपर लोगो, टैग लाइन, प्रेस्क्रिप्शन, बैग, आपने जैसे बोला था कि पेशेंट को गिफ्ट देना है, ठीक है, और क्लिनिक और जो स्टाफ है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। टीम मीटिंग से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ सर, कि कैसे ज़्यादा पेशेंट को क्लिनिक में लाना है, चाहे जो पेशेंट आ रहा है कैसे ट्रीटमेंट करना है। मार्केटिंग पर भी ज़्यादा ध्यान दिया सर, अभी लास्ट ईयर से ज़्यादा हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी अभी 1 2 साल से हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना जो है सर, ये जो फाइनेंस के बारे में बताया कि फाइनेंस का भी मैं कंट्रोल किया। उसके बाद से जैसे आपने बोला गोल, गोल सर काफ़ी अलग गोल, स्मार्ट गोल बनाने से काफ़ी सर हेल्पफुल हुआ कि हाँ हम ये अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद से जो जो सबकॉन्शियस लेवल पर जो जो आपने बोला है कि गोल कार्ड रोज रीड करना है, अफर्मेशन करना है, ये सब वर्क किया सर। Okay. In very simple words and very coolly, calmly, he spoke about so many things. Did you realize that, guy? Okay. So the first was the patient consultation template. Absolute game changer. Guys, those of you who are not part of our gold membership, so it's a $1 million template. I always say this. You just use the patient consultation template or do the patient consultation the way I tell you, and you can convince any patient for any treatment for any cost, no matter what. Okay. The second powerful thing that he shared was, the staff meetings. A lot of us ignore that particular part in the clinic. And staff meetings, like, when you start taking the staff meetings, the staff become, like the entire work culture in your practice becomes very smooth. Okay. People become more responsible, people become more accountable to the work, towards their own commitment to your practice. And they start being more enthusiastic because, see, if you have to, face each other in that meeting very, very frequently. Okay. Like if you take the meeting once a week, twice a week, every day, whatever. So you just cannot hide behind the bushes. And people understand that आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा. So people start improving. Okay. That's a very powerful thing. I keep on telling all of you to, start conducting the staff meetings, right? Then marketing, very, very important because unless you do that branding and marketing part, okay, a lot of dentists I see, they just don't have logos in their clinic, no, don't have taglines of the clinic. And we don't understand simply because nobody has taught us. But unless you present your particular practice in a certain way in which people wants to see you, people wants to see a dental practice. Unless you present it that way, it will never work for you. So 4 time growth doesn't happen overnight. 4 times doesn't growth doesn't happen without doing things. Okay, so it's a very sustained, ongoing efforts that leads to your 4 times, 6 times growth in the practice. Okay, and but at the end, all the efforts, all the hard work, everything is always worth. Okay. So, yes, PC. So implemented so many things. Now marketing also has started well, and 2000 square feet is in making almost now. Going forward, what's ahead?
तो क्या सर है आगे का प्लान, सपना? आपने जो एक चीज, अभी तो मैं जैसे बताया कि मैं मेरा सर ये है कि 2000 स्क्वायर फीट का 5 स्टार डेंटल क्लिनिक मैं रोज लिखता हूँ। अभी अभी सुबह शाम भी, मैंने अभी तो रोज सुबह लिख रहा हूँ सर, आपने बोला है लिखने से होगा, तो आई एम स्टार्टिंग राइटिंग दिस। और एक चीज आप बोलते हैं कि सर हम लोग को मिनिमम में, कल भी आप परसों भी आप बोल रहे थे कि मिनिमलिस्टिक लाइफ नहीं लीड करना है। तो पहले हम लोग सोचते थे चलो भाई जो भी प्रैक्टिस हो जाएगा जैसे तैसे करके रह जाएंगे। तो दिस माइंडसेट वाज इनिशियली सर, कि लेकिन अब वैसा माइंडसेट नहीं है। तो अब लगता है कि हाँ वी आर एबल टू डू एवरीथिंग सर, जो हम चाहेंगे वो कर पाएंगे सर। Okay, powerful. This is, look at the conviction now, right? And yes, and that's what I keep on saying all the time. You keep on working on yourself and you start getting that conviction that I can do it. It's not impossible. So, and you can achieve any dream, any goal. Okay. Because if you remember that, Deepak Chopra sentence, inherent in having the desire has the mechanics of its fulfillment. So you have the desire, it's going to get fulfilled. It's so simple, right? So all you need to do is just have it. Okay. Keep on working on yourself. Keep on rewiring your subconscious mind. Keep on reading your goals every day. Keep on practicing affirmations to fuel your goals. And there is no looking back. So, what message you would like to give to everybody, PC? सर मैं तो सबको बोलूँगा कि सर का जो कोर्स है जितना भी है, सिल्वर गोल्ड डायमंड लाइफ एक्सेल, ज्वाइन करें और इस इन्वायरमेंट में रहें। क्योंकि इस इन्वायरमेंट में रहने से हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि हम कभी लो भी हो जाते हैं तो यू अगेन कम बैक टू द नॉर्मल। तो इस इन्वायरमेंट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा है कि जो भी पहले मुझे भी डाउट होता था कि हाँ सर ऐसा बोल रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ है कि आप टोटल सरेंडर टू आपका जो सर है, मेंटर है, उसके ऊपर। और तीसरा सर आपने बोलते हैं ना बी इन एक्शन मोड, थोड़ा थोड़ा करके एक्शन मोड में रहना है, तो तब काम होगा। नहीं तो हम लोग सोचते हैं लेकिन यदि हम एक्शन नहीं लेते हैं तो नहीं होता है। Oh, wonderful. Okay. So, first thing is be in the right environment. Okay. You should have a group of people around you who are thriving to grow, who intend to grow, who are happy growing, and who will be happy with your growth. And this wonderful community is the finest thing you can have, you can use for your own growth, right? So, in the right environment, keep on taking action because there is no substitute for action taking. Okay. Keep on taking action all the time. And most importantly, whatever we do, okay, I see, I'll tell you what, any course that, I could create in my life, I feel so happy when I see these kind of changes actually. Okay. Because when I started this journey, I also never thought that, it will create this kind of impact in the dental fraternity, medical fraternity as a whole. And so be there. So it's not just that, these are the courses and I want your money. And that's why I'm saying, trust me, it's, you all know now, our community, our journey has gone way beyond all this now. Okay. So, be here because very rarely you will get a mentor, very rarely you will get a curriculum which is so self-sufficient, which is more than enough for you to grow to any level. Those of you who are diamond members, I always say this. The entire purpose, or I keep on thinking, is to develop a curriculum where people should not need anything beyond this to take their practices to any level you want. And that's why we keep on, getting the kind of results that we get. Okay, so congratulations, PC, once again for your humble beginning to the wonderful success. And as I always say, it's just the beginning, and it's just going to go better and better and better from here. So all the hard work that you have done over the 2 decades or couple of decades is now for time, it's time now that it starts paying all the fruits that you want. So congratulations, and